morning, students. Today we are discussing the dielectrics. Actually, dielectrics is what? Dielectric are the insulating material which transmitted the electric effect without actually conducting the electricity. Okay. So actually, dielectric is the insulating material which has a higher power, which has a very higher value of dielectric constant. So dielectric is the insulating material which transmits the electric effect without actually conducting the electricity. What is the effect of the dielectric when it inserts between the electric field, and what is the effect on the conductor when it is the conductor and it is the insulator? When we apply the electric field here, we are applying the electric field here. When we apply the electric field, actually in a dielectric, positive and negative both charges are equal and they are always combined together. They have a उनका जो center होता है, either they are coinciding or they are slightly at a certain distance. Okay. So when we apply the electric field against the dielectrics, so their positive and negative charges are displaced from their position. Their center get to be displaced, and due to displacement, there will be it form a dipole. It forms the dipoles. That is, the negative is attracted towards due to the attraction. So here producing dipole, and the dipole moment and creating the electric dipole moment. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मेशन करता है और सम चार्जेज आर इंड्यूस्ड, अपोजिट चार्जेज आर इंड्यूस्ड. यहाँ यदि पॉजिटिव है तो इसके तरफ नेगेटिव इंड्यूस्ड हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस्ड होता है. ठीक है. बट इनसाइड द इसके अंदर ये जो अंदर जो इंड्यूस्ड हो रहा है क्यू डैश और क्यू, सो ये एक्चुअल में क्यू डैश जो हमारा होता है वो क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर के बराबर होता है. ठीक है. इस केस में ड्यू टू द एप्सिलॉन आर क्यू डैश इज ऑलवेज लेस देन क्यू. इस केस में तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाता है ई माइन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें होगा ई माइनस ई डैश, वेयर ई डैश इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बाउंडेड चार्ज. इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंडेड चार्ज. Okay, or in case of conductor, here we have a conductor. तो conductor के केस में क्या होता है? They have free electrons. बहुत सारे free electrons होते हैं. So as soon as we apply the electric field, all these free electrons get drifted. These free electrons are exerted a certain force, that is E into E, and due to such force, it always move opposite to the electric field, and all electrons are drifted towards its surface, and whole charge जो भी पूरा चार्ज है वो इसके सरफेस में रिसाइड कर जाता है और Q इक्वल टू 0 रहता है इसमें. ठीक है. ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर इंड्यूस चार्ज और चार्ज ये दोनों इक्वल होता है और नेट चार्ज यदि हम देखें तो नेट चार्ज हमारा 0 होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है. तो इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक इज एक्चुअली insulating material which transmitted electric effect without actually conducting the electricity. So that is a dielectrics. Okay. So now types of the dielectrics. Types of dielectrics is what? There are the two types. First one is the polar dielectrics and another is the non-polar dielectrics. The types of dielectrics. There are the two types. First one is the polar dielectrics
and second one is the non-polar dielectrics. So what is the difference between these two dielectrics? In non-polar dielectrics, center of the positive or negative are coinciding, but in case of polar, the center of the positive and negative doesn't coincide. So first of all, we explain about the polar. So what is the polar dielectrics? So in polar dielectrics, center of positive and negative charge are separately are not coinciding. They are not coinciding. Hence, they have an initial dipole moment. मतलब इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो थोड़ा सेपरेट होता है. अब ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव का है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के सेंटर जो थे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब अलग अलग है. तो डेफिनेटली वहां पर डायपोल का फॉर्मेशन होगा और डायपोल होगा तो वहां डायपोल मोमेंट होगा. बट दीज टाइनी डायपोल्स आर मूविंग along the zigzag path, and due to the zigzag path their net dipole moment, but due to zigzag path net dipole moment is zero. Okay, but in case of non-polar, in non-polar, center of positive and negative charges are coinciding. That means the positive and negative both are at the same, both center are coinciding there. The center of positive and negative charge are coinciding. Therefore, initially they have not any dipole moment. But what happens when we apply the electric field? Then what happens when we apply the electric field? These positive and negative charges are displaced from their position. That means if the length between the positive and negative charge get increased, and due to the increase of positive and negative charge, there are a dipole moment. It increase the dipole moment from initial dipole moment. यानी जो dipole moment पहले था उससे थोड़ा उसका dipole moment बढ़ जाता है. और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब ये सारे dipole moment क्रिएट करता है और all dipoles are aligned along opposite to the electric field. That's why it induced इसमें एक चार्ज इंड्यूस्ड होता है इसीलिए. ठीक है, इसमें क्या होता है नॉन पोलर में दे आर कोइंसाइडिंग, बट व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजीशन. दैट्स व्हाई द सम डायपोल मोमेंट आर क्रिएटिंग देयर. कुछ डायपोल मोमेंट वहां पर क्रिएट हो जाता है. और इसमें इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in presence of electric field, center of positive or negative charge
center of positive or negative charge, positive and negative charge, are displaced. Hence, a resulting dipole moment are created. Resulting dipole moment है are created. In this case, the center of positive and negative in presence of electric field, we are discussing now. इसको ऊपर लिख देता हूँ. In presence of electric field, center of positive and negative charge are displaced. Hence, the length of dipole get increased. As a result, their dipole moment get increased and aligned opposite to the applied electric field. Okay, hence it produces induced field. Inside the dielectrics. Okay, so it is the process for the dielectrics. In this case, non-polar, when dipole moment is creating, so it is also producing the induced field inside the dielectrics. If we calculate the net field is always equal to applied field minus induced field. Okay, so now we look what is the effect of dielectrics when it insert between कैपेसिटर प्लेट्स. जब हम कैपेसिटर प्लेट के बीच में किसी भी डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो वो डायलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है, वो क्या इफेक्ट डालता है, वो इफेक्ट हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका दी separation of plate between this capacitor, effect of dielectrics when it insert between plates of capacitors. Parallel plate capacitor, just like a plate of capacitor. Suppose it is a dielectric. ये हमारा कैपेसिटर है
इसके दो प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, and d with the distance between them. Let a be the area of each plate. Area of each plate. D separation between the plates. Distance between the plates. दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है. Now we insert a dielectric partially. अब इसमें एक partially हम लोग बीच में insert करते हैं dielectrics, having the dielectric constant K. इस K को हम लोग एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, relative permeability होती है एक ही. We insert the dielectrics inside it. Due to this dielectrics, an induced field. A field is induced inside the dielectrics, which is always opposite to, इसका डायरेक्शन इधर होगा, और जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच जो चार्ज है उसके कारण है, और ये ई डैश जो है उसमें चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, और इसकी थिकनेस कंसीडर कर लेते हैं, इट्स थिकनेस इज टी. So now we insert a dielectrics of thickness T as a partial. Okay, due to dielectrics, an electric field E dash induced in it. इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश आ जाएगा जो इसमें इंड्यूस्ड होगा, ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? वी हैव ऑलरेडी नो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी. Charge density of plates, of charge plate. It is the net electric field between two plates. Okay, so and induced field E dash, that is equal to sigma by epsilon naught into K. K is the dielectric constant. It is the dielectric constant. Okay, so now we have to find the potential difference. Therefore potential difference कितना होगा? Potential difference inside it, dielectric, inside the dielectric, and also the potential difference across these two plates in air. The potential difference across the plates in air, that is equal to E into R, E into D minus T. Why we are using here D minus T हमने यहाँ पे यूज किया है, because T is the thickness of dielectrics, so remaining distance is D minus T is there. Okay, so E equal to D minus T. अच्छा, एक चीज बता दें पहले भी, why we are taking the V equal to E R. Actually here we have a distribution of charge as a discrete, not as a continuous. यहाँ पे continuous distribution नहीं है. जब हमारा continuous distribution होता है तो हमारा dV इक्वल टू होता है E डॉट dr, और हमारा ये होता है
तो हमारे पे यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट है, बीच में कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द सिंपल रिलेशन, क्योंकि हमारे पास E इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर और V इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, और इन दोनों से हम ये रिलेशन फाइंड करते हैं V इक्वल टू E इंटू आर, सो वी आर यूजिंग दियर E इंटू टी माइनस टी, एंड वैल्यू ऑफ E that is the potential difference is given sigma by epsilon naught d minus t is there, so q by epsilon naught d minus t upon a, because the sigma is always q by a. Similarly, potential difference in dielectrics. In dielectrics, what is the V dash? V dash is equal to sigma upon epsilon naught K into T. Okay, so we have already find what potential difference in air remaining part and potential difference across the dielectrics. So total potential difference, net potential difference, adding both of them. So Q, and it is written as a Q by A epsilon naught K into T. So now we add both of them. So A epsilon naught, that is the T by K plus D minus T. Okay. So now look here, it can be written as इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं, epsilon naught D minus T, T taken common, 1 minus 1 by K. तो जस्ट लुक हियर, यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे हम डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, देन व्हाट हैपन, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पहले पोटेंशियल कितना था, Q by A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अब डायलेक्ट्रिक के कारण उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, एंड व्हेन द पोटेंशियल डिक्रीज, जब भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होती है। सो व्हाट हैपन इन कैपेसिटी, हम कैपेसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैपेसिटी जब कैलकुलेट करेंगे, देखो इधर कैपेसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज कैपेसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू Q by V. One thing remember, this V is not a potential only, it is a potential difference. Because simple potential का कोई मीनिंग नहीं होता। जब भी हम कोई पोटेंशियल की बात करते हैं, always we are taking the concept of potential difference. Suppose any charge and we find the potential at a point, that means we compare its potential with the point at the infinite. So we are always taking the potential difference in here. So Q by V, V नीचे चला जाएगा, then it will be equal to A epsilon naught divided by D minus T 1 minus 1 by K. K is the dielectric constant. So just look what happened. D नीचे डिनोमिनेटर कम हो गया, इसको यदि हम एयर वाले से कंपेयर करें, सपोज विदाउट, ये हमारा हो गया विदाउट डायलेक्ट्रिक्स कितना होता है, without dielectrics, when we are taking the without dielectrics, see air, that is equal to A epsilon naught by D. So denominator is decreasing there, and due to decreasing of denominator sorry, capacity will increase. Compare these two, then we get the C dash is greater than C air. So hence we say that, hence we can say, when we insert any dielectric between the plates, capacity of that capacitor must be increased. So that is the effect of dielectric when we insert that. That is the effect of that when we insert dielectric between the plates of capacitor. Okay. Suppose we insert the dielectric completely between the plates, then what happens? In that case, if dielectrics insert completely,
dielectric insert completely. Then what happens? In that case, D and T are equal. So we substitute the value of here and it becomes the A epsilon naught divided by D minus D 1 minus 1 by K, and it becomes the A epsilon naught K upon D. So it is a simple C air into K, and by this we also get the formula for dielectric constant, that is this capacity when dielectric is inserted divided by capacity without dielectrics. So it can be also defined. It is the ratio of capacity when we insert any dielectric between the plate divided by when we do not insert the dielectrics. So when we compare these two capacities, then we get the dielectric constant. Okay. In next video, we are discussing about the parallel and series combination of dielectrics and various types of problems. जो theoretical part है वो यही तक था. So in next video, we are discussing a lot of problems related to capacitor, including dielectrics. Thank you.